Next is glomerular filtration rate. अभी हम लोग क्या देखे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखे हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर देखे हैं? फिल्ट्रेशन प्रेशर. Now will comes to the glomerular filtration rate. Very important. GFR. अगर ये 10 mmHg प्रेशर में अगर फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ filtrate produced per minute? In this particular pressure that is 10 mmHg, if the filtration is occurs in the kidney, then what is the amount of filtrate produced is called as glomerular filtration rate, and that is 125 ml per minute. कितना है वो? 125 ml per minute. अगर 125 ml per minute है तो उसको अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे so that will be 7.5 लीटर पर आवर. और अगर हम इसको डे में कन्वर्ट करेंगे 24 आवर में, that will be 180 लीटर पर डे. Just imagine कि अगर 10 mmHg प्रेशर में अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूसिंग पर डे. यूरिन कितना फॉर्मेशन होता है? 1.5 लीटर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 180 लीटर. तो ऑलमोस्ट 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अगेन बैक टू द बॉडी. मींस उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, रीअब्सॉर्ब्स, जो कि सेकेंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, सिलेक्टिव ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्ब्स. 99% बैक अगेन इनटू द ब्लड. 1.5 लीटर सिर्फ एक्सक्रीट होता है. वो हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉइंट नंबर 2 में. बिफोर दैट बाकी रेस्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेते. नेक्स्ट इज renal plasma flow, that is RPF. renal plasma flow और RPF. मैंने आपको जस्ट बताया था कि RBF कितना है, रेनल ब्लड फ्लो. रेनल ब्लड फ्लो कितना था? 1100 टू 1200. ब्लड टॉपिक में आप लोग पढ़े हो कि ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा, 45% होता है कॉर्पस्कल्स. ये क्या है? रेनल ब्लड फ्लो है कि प्लाज्मा फ्लो है? ब्लड फ्लो था तो 1100 टू 1200. RBC WBC प्लेटलेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? लिक्विड पार्ट की सॉलिड पार्ट. लिक्विड पार्ट कौन है? प्लाज्मा की कॉर्पस्कल्स. तो which percentage of the blood will be participate in the filtration? Na renal plasma flow. And renal plasma flow means 55% of RBF. है कि नहीं? 55% of the RBF और renal blood flow का. And renal blood flow कितना मैंने बताया था ना? 1100 to 1200 ml. तो रेनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा ना? 600 to 700 ml. On average that will be we are taking as a 650 ml. है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे रेनल प्लाज्मा फ्लो निकाल दिए. कितना है? 650 ml एवरेज, which is 55% of the RPF. अब इस नेक्स्ट बात है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, लार्ज बिग मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो लार्ज बिग मॉलिक्यूल क्या फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा या स्मॉल? So 55% of blood also does not participate in the filtration directly. What is the fraction? What is the fraction which is actually filtrating?
अगर 55% फिल्ट्रेट होता तो 55% पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता, रहेगी नहीं, लेकिन 55% पूरा का पूरा फिल्टर नहीं होता है। तो 55% का कितना प्रॉपर्शन, कितना फ्रैक्शन फिल्ट्रेट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। Filtration fraction, proportion of fluid reaching the kidney the proportion of the fluid reaching the kidney and filtrate is called as filtration fraction, and that is FF is equal to GFR by RPF into 100, make it percent. तो GFR कितना था 125, RPF कितना है 650 into 100, that will be 19.2%, and ये वैरी करता है from 15 to 20%. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकल गया आपका। तो यहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बायोमोलिक्यूल में टॉपिक पढ़े थे हम, याद है क्या? याद है इन्यूलिन used to measure GFR, याद आया? And second is para-amino hippuric acid. para-amino hippuric acid PAH भी लिखते हैं, PAH भी लिखती है, पाहा भी लिखते हैं, that is used to measure renal plasma flow. रेनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए पारा अमीनो हिप्पुरिक एसिड एंड इन्यूलिन इज टू बी यूज्ड टू मेजर द जीएफआर। अभी मैंने जस्ट बोला था कि 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस पर डे, but urine formation approximately 180 liter only, sorry 1.5 liter only. So what is the amount of the glomerular filtrate to be absorbed again back into the body? 99% again back to the body. अभी सवाल ये है कि अगर बॉडी का प्रेशर इंक्रीज करेगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज करेगा, and that ultimately gives rise to what? The increasing quantity of urine. If the pressure will decrease than the normal, the filtration rate also decreases, the urine formation also decreases. ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। प्रेशर हाई हो या प्रेशर लो, body has self-regulating capacity so as to manage this filtration, so that the urine formation almost controlled. या प्रेशर हाई हो या प्रेशर लो, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अगर सोचिए प्रेशर अगर हाई हो गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, अगर रेट बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन अमाउंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है, फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट हर किसी का सेम होता है, सबका ऑलमोस्ट 180 लीटर पर डे होता है, इसलिए यूरिन फॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट 1.5 लीटर होता है। आई एम टेलिंग अबाउट द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। डिजीज केसेस में अलग हो जाएगा, किसी में जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस,
वहां पे यूरिन फॉर्मेशन का क्वांटिटी बढ़ जाता है, वो समथिंग सेपरेट है, वो डिफरेंट है. Means there is a mechanism which is called as auto regulation of glomerular filtrate. Auto regulation of glomerular filtrate. ऑटोमेटिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का क्वांटिटी को रेगुलेट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. मैं यहाँ पे 4 केसेस आपको समझाऊंगा. फर्स्ट, मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन. मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन. So let's come to the myogenic autoregulation. So myogenic autoregulation in response to high blood pressure, increased blood flow, and increased GFR. In response to high blood pressure, increased blood flow, and increased GFR. ये तीनों कंडीशन जब होगा तब मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन बॉडी में फंक्शन स्टार्ट करेगा. तो मैंने क्या लिखा है? इन रेस्पॉन्स टू हाई बीपी, हाई ब्लड फ्लो एंड हाई और इंक्रीज्ड जीएफआर. तो फिर इस ऑटो रेगुलेशन, मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन का फंक्शन क्या होगा? टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, टू डिक्रीज द ब्लड फ्लो एंड टू डिक्रीज द जीएफआर. रिस्पॉन्स क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे करता है, ये देखना है. क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसको नॉर्मल करना है. कैसे? डिक्रीज करके. अगर इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर डिक्रीज हो गया तो ये किस कंडीशन में? इंक्रीज कंडीशन में. तो इसको क्या करना है? टू बैक इनटू नॉर्मल. यही तो फंडा. अगर हाई हो जाएगा तो डिक्रीज करेगा, तो लो हो जाएगा तो इनकी इंक्रीज करना है. सो लेट्स सी. राइज इन ब्लड प्रेशर gives rise to increased blood flow through glomeruli. अगर प्रेशर हाई होगा तो ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलस के थ्रू इंक्रीज करेगा कि नहीं? अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलस के थ्रू, ग्लोमेरुलर कैपिलरी स्ट्रेच होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? दैट गिव्स राइज टू ओवर स्ट्रेच. ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेसल वॉल. अगर ओवर स्ट्रेच हुआ, इमीडिएटली क्या होगा ना, कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू वेसल वॉल. एंड वेसल वॉल में हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, स्मूथ मसल होता है. यस और नो? तो स्मूथ मसल्स में अगर कैल्शियम इनफ्लक्स होगा तो ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा. अगर स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो ये ओवर स्ट्रेचिंग और रेजिस्ट करेगा कि नहीं? अपोजिटली रेजिस्ट करेगा. तो रेजिस्ट करेगा तो ल्यूमेन का साइज क्या होगा? नैरो हो जाएगा. ब्लड फ्लो का क्वांटिटी क्या होगा ना, कम हो जाएगा. ठीक है.
So contraction of smooth muscle of blood vessel. So raise the vascular resistance. Raise the vascular resistance to prevent overstretching. And that gives rise to decrease the blood pressure, blood flow, and GFR. ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, उसका जो स्ट्रेचिंग एबिलिटी उसको डिक्रीज कर देगा. स्ट्रेचिंग एबिलिटी जो जिस तरीके से स्ट्रेच हो रहा था प्रेशर बढ़ने की वजह से, ये क्या करेगा, उसको मिनिमाइज कर देगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम. तो उस ओवर स्ट्रेचिंग को ही प्रिवेंट करने से एक वैस्कुलर रेजिस्टेंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का ल्यूमेन का साइज डिक्रीज करेगा, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, तो आगे चल के प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं. जिस प्रेशर से जा रहा था ब्लड, ये यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तो प्रेशर आगे चल के प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. सो दैट द फिल्ट्रेशन विल आल्सो डिक्रीज. तो जीएफआर कम हो गया तो नॉर्मल जितना फिल्ट्रेट होना चाहिए उतना ही होगा. क्लियर है. ये था फर्स्ट मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन. जो सेकंड हम लोग डिस्कशन करने वाले, तो मोस्ट इंपोर्टेंट रैस मैकेनिज्म. रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम. रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रैस. So here the RAS mechanism is operated in response to low blood pressure, low blood flow, and also decreased GFR. ये पूरा opposite है कि नहीं. When the blood pressure decreases, GFR decreases, blood flow decreases, and then in that response, the RAS will activate. So RAS mechanism will be operated or occurs in the body in response to decreased BP, decreased blood flow, and decreased GFR. So how they will ultimately increase or decrease? Increase करेगा. तो कैसे करेगा वही देखना है. स्टार्ट करें. एंजियोटेंसिनोजेन angiotensin is a hormone which is secreted by liver. ठीक है. angiotensin, 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 angiotensin
will be breakdown into angiotensin 1. एंड ये जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है because of the presence of the hormone called as what na renin. So this breakdown process of the angiotensin or gen into angiotensin 1 in presence of what the renin. And renin हम लोग पढ़े थे secreted by what ना जेजी से. लीवर कहाँ से हो गया? अंक आया क्या? बहती गंगा भेजा. ये भी लीवर है, वो भी लीवर है, ये भी लीवर है, सब लीवर है. So renin secreted by the JG cell of kidney that will break down the angiotensin or gen into angiotensin 1. Now this angiotensin 1 will be again break down or converted into angiotensin 2. Angiotensin 1 into angiotensin 2. इसको कन्वर्सन कौन करता है ना? दैट इज angiotensin converting enzyme, that is ACE, secreted by lungs. lungs में यूनिट ऑफ लंग्स कौन है? alveoli. अल्टीमेटली ये alveoli secrete करता है ये एंजाइम, angiotensin converting enzyme, and that angiotensin converting enzyme will convert the angiotensin 1 into angiotensin 2. क्लियर है? अब angiotensin 2 का ही इंपॉर्टेंट रोल. सीधा यहाँ पे उसका फंक्शन बताता हूँ, रोल बताता हूँ एंजियोटेंसिन का, एंजियोटेंसिन 2 का. फर्स्ट एंजियोटेंसिन 2 act as vasoconstrictor. Angiotensin 2 act as what? Vasoconstrictor. Second function, angiotensin 2 that will enhance or stimulate the absorption of NaCl and water more in PCT. Proximal convoluted tubule से more water absorption and more NaCl absorption को ये stimulate करेगा. तो एंजियोटेंसिन 2 का सेकेंड टारगेट क्या है ना? PCT. फर्स्ट टारगेट क्या है ना? ब्लड वेसल, वैसोकंस्ट्रिक्टर. सेकेंड टारगेट क्या होगा ना? PCT. टारगेट नंबर 3, the angiotensin 2 stimulate the adrenal cortex आप लोग पढ़े हो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला तो बोथ पार्ट ऑफ द एड्रेनल रहेगी नहीं. तो सिक्रेट एल्डोस्टेरोन मोर क्वांटिटी. हम लोग एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है कॉर्टिकॉइड्स, एंड देयर आर मेनली 3 ग्रुप ऑफ कॉर्टिकॉइड्स आर देयर. मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड. थोड़ा बहुत आइडिया होगा. एंड एल्डोस्टेरोन इज वन ऑफ द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. तो एल्डोस्टेरोन कौन से कैटेगरी में आता है? कौन से कॉर्टिकॉइड के अंडर आता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. एंड इसका फंक्शंस क्या है ना? टू एब्जॉर्ब मोर NaCl. लेकिन इसका टारगेट क्या है? नॉट PCT बट DCT. सो stimulate the adrenal cortex to secrete aldosterone more, which
act on DCT to absorb more NaCl and thereby water also absorb osmotically. अगर NaCl ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो उसको फॉलो करेगा वाटर भी, ऑस्मोसिस के थ्रू फॉलो करेगा कि नहीं? तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, ना ओनली NaCl, ओनली वाटर, NaCl वाटर बोथ? क्या होगा? NaCl वाटर बोथ। तो पीसीटी में भी क्या एब्जॉर्ब होता है? NaCl एंड वाटर। डीसीटी में भी क्या एब्जॉर्ब होता है? ना NaCl एंड वाटर। हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब अगर तीनों चीज को आप एक साथ कंपेयर करिए कंपेयर तीनों, वैसे कंस्ट्रक्टर भी हो रहा है पीसीटी पार्ट में, मोर NaCl वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, डीसीटी पार्ट में भी NaCl वाटर एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन कहां से कहां पे होता है? फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू ब्लड और फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिक्स होगा, तो ब्लड में NaCl का क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, ब्लड में वाटर का क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड फ्लो इंक्रीज, एंड क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्टर भी था तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं? एंड देयरबाय GFR आल्सो इंक्रीज। लीड्स टू increase blood flow, blood pressure and GFR। रैस आपको समझ में आया? तो सपोज टू भी आप बहुत ही हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज टू भी आप फिजिकल हेवी लेबर कर रहे हैं, so what will be happen? RAS will activate or RAS will suppressed? क्या करेगा? RAS वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है? ज्यादा कर रहा है कि नहीं? तो सप्रेस कैसे होगा? हाँ, अरे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, water need for the body more or the urine will be excrete more? Water will be need body for more, तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा कि वाटर एक्सक्रीशन ज्यादा होगा? एंड ये तो वही कर रहा है। देखो मैंने छोटा सा क्वेश्चन पूछा, आप लोग फंस गए। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी से कंसीडर कर लीजिए। कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको डेमो दिखा दूं। नेक्स्ट एंड नंबर 3 इज ANF मैकेनिज्म। तो ठीक हुआ ना, हार्ट रेट के साथ क्या रिलेशन है? हम लोग को वाटर कंजप्शन करना, ये ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है। तो फिर ये अगर एक्टिवेट हो, ये अगर सप्रेस हो जाएगा तो ब्लड जो यूरिन फॉर्मेशन तो ज्यादा हो जाएगा। अगर यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हुआ तो वाटर स्कैसिटी होगा, है कि नहीं? चले नेक्स्ट पे। नंबर C, ANF mechanism। Atrial natriuretic factor, also called as atriopeptine।
So ANF or atropeptine, it is a peptide hormone, so it is called as peptine, secreted by auricle of heart. तो हार्ट वाल भी देखो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है. So atrial natriuretic factor or ANF or atropeptine, it is a peptide hormone secreted by the atria or auricle of heart, and it is in response to overactivation of RAS. Overactivation of RAS. That is high blood pressure and high blood flow. तो ये रैस का ऑपोजिट है कि नहीं, एंटागोनिस्टिक टू रैस. रैस में क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, तब रैस एक्टिवेट होता है कि नहीं. सो दैट रैस विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज द ब्लड फ्लो. ये क्या है ना, एएनएफ इज अपोजिट ऑफ रैस. तो जब ओवर एक्टिवेट हो जाएगा रैस, रैस का ओवर एक्टिवेशन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, दैट इज, है कि नहीं. उस केस में ये क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा. कैसे डिक्रीज करता है, लेट्स सी. इट इनहिबिट्स renin, so oppose RAS. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब पूरा एंटायर प्रोसेस को समझिए. अगर रेनिन हार्मोन सिक्रेशन स्टॉप हो गया तो एंजियोटेंसिनोजेन विल नॉट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, तो एंटायर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा कि नहीं. तो ये अपोज कर रहा है कि नहीं रैस को, बाय मींस ऑफ इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ रेनिन. सेकंड, it acts as vasodilator. लेकिन एंजियोटेंसिन 2 क्या था, वैसोकंस्ट्रिक्टर. सो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो इसीलिए तो वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है. It reduces the secretion of aldosterone. अच्छा, एल्डोस्टेरोन का रोल क्या था, इंक्रीज द Na प्लस एब्जॉर्प्शन, NaCl एब्जॉर्प्शन की डिक्रीज द NaCl एब्जॉर्प्शन. मतलब NaCl के एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, तो NaCl एक्सक्रीशन को डिक्रीज करेगा कि NaCl का एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा. लेकिन ये ऑपोजिट है. इट रिड्यूसेस द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन. मतलब क्या है, they will increase the excretion of NaCl. अगर NaCl एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा तो ब्लड में NaCl कम हो जाएगा. अगर ब्लड में NaCl कम हुआ तो वाटर का क्वांटिटी भी कम होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो it reduces the secretion of aldosterone, so increase the Na plus excretion and decrease or inhibit the Na plus absorbs. So increase the Na plus in excretion
and decrease the Na plus absorption as it is what? Now reduce the secretion of aldosterone. तो कितना इंपॉर्टेंट है वो समझिए. रैस एंड एएनएफ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटेड है. अब सबसे ज्यादा आप इन्हीं दोनों में फंसने वाला हो वो भी गारंटी है. तो लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा. एएनएफ नीड टू व्हाट? इंक्रीज द ब्लड फ्लो के डिक्रीज द ब्लड फ्लो? ANF need to what? Decrease the blood. Sure. बोलिए, ANF को क्या करना है? ब्लड फ्लो को डिक्रीज करना है, ब्लड क्वांटिटी को डिक्रीज करना है. यस और नो? अगर ब्लड क्वांटिटी को डिक्रीज करना है, ब्लड फ्लो को डिक्रीज करना है, कैसे करेगा? अगर ये यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर दिया तो? अरे समझिए, अगर यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो गया, अगर फिल्ट्रेशन ज्यादा हुआ, तो ब्लड का क्वांटिटी कम होगा कि नहीं? ब्लड का वॉल्यूम कम होगा कि नहीं? ब्लड फ्लो कम होगा कि नहीं? ब्लड, इसीलिए ये जीएफआर को इंक्रीज करेगा. कंफ्यूजन होगा ये जीएफआर में. रैस भी जीएफआर को इंक्रीज करता था, ये सब नो. देखिए भाई, रैस जीएफआर को इंक्रीज कर रहा था कि डिक्रीज कर रहा था? क्या मैंने लिखा वहां पे? इंक्रीज. तो रैस तो अपोजिट है. एएनएफ एंड रैस आर अपोजिट और सिनर्जिस्टिक? अपोजिट. तो फिर अगर रैस जीएफआर को इंक्रीज करता था, तो एएनएफ जीएफआर को डिक्रीज करना चाहिए था. रहेगी नहीं? लेकिन एएनएफ क्या कर रहा है ना, जीएफआर को भी इंक्रीज करता है. अगर जीएफआर इंक्रीज करेगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो यूरिन का क्वांटिटी बढ़ेगा, बट ब्लड का क्वांटिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा. प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. फ्लो क्या होगा? डिक्रीज करेगा. इसीलिए ये क्वेश्चन. इट इंक्रीज जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करेगा. सो डिक्रीज ब्लड फ्लो और ब्लड वॉल्यूम. ये ब्लड जीएफआर को इंक्रीज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. कंप्लीट है. बाकी लास्ट है नंबर 4, नर्वस कंट्रोल. नर्वस जो कंट्रोल होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है. एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का है. एक है सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक. तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा ना, दैट विल हियर कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल. अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक, तो ये सिंपैथेटिक क्या हुआ, वैसे कंस्ट्रिक्टर हुआ कि नहीं? तो अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर and increase the blood flow, thereby increase GFR. ऐसे
ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर को अगर इंक्रीज किया, लेकिन कंस्ट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन होने से ल्यूमेन का साइज वाइडर होगा कि ल्यूमेन का साइज नैरो होगा? नैरो हो जाएगा। अगर नैरो होता है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज द ल्यूमेन। अगर ल्यूमेन का साइज डिक्रीज करता है, then that gives rise to decrease the blood flow and decrease the GFR। क्या होगा? GFR यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले ही बोला था कि स्ट्रेस कंडीशन में यूरिन फॉर्मेशन मोर होता है कि लेस होता है? लेस। तो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, प्रेशर तो इंक्रीज किया बट डिक्रीज द लुमेन, सो डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड GFR। लेकिन उल्टा हो जाएगा। हम लोग जब नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं, हम लोग का यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है कि नहीं? तो vasodilation, wider lumen leads to increased blood flow and GFR। last mechanism was लिखा है increase blood flow, blood pressure and GFR। blood pressure जो increase करेगा blood flow ही बॉडी में एक जगह पे एक साथ ब्लड प्रेशर हाई और लो नहीं होता है। हम लोग क्लियरली पढ़े हैं, टिश्यू चैप्टर निकाल के देखो, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होता है। कौन सा? ब्लड वेसल्स। तो मल्टी यूनिट है, तो प्रेशर अगर हाई होगा, किसी जगह पे कंस्ट्रिक्शन हुआ, तो क्या एंटायर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन होता है? तो लोकल जगह पे होता है। तो लोकली अगर कंस्ट्रिक्शन हुआ तो आप ये क्यों समझ रहे हैं कि पूरा बॉडी का ही प्रेशर इंक्रीज कर गया? इसीलिए तो हर चीज टिश्यू के साथ रिलेटेड है। टिश्यू में इसीलिए मैंने पढ़ाया था कि मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होता है, ब्लड वेसल्स। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टेप नंबर 2, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप क्या गया था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। याद आया? सेकेंड स्टेप क्या आ गया? जो आप लोग हेडिंग दिए थे, जिस टाइप का हेडिंग दिएंगे उसी टाइप का ही हेडिंग को फॉलो करिएगा। मुझे याद नहीं रहता, मैं ऐसे खाली नॉर्मल हेडिंग देके छोड़ दूंगा। सो दिस इज द सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। Why it is called as selective? Why it is not called as normal reabsorption? Because absorption of different substance occurs in different part of nephron selectively। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक चीज हर जगह पे ऑब्जर्व होगा। सिलेक्टेड पार्ट में सिलेक्टेड चीज ऑब्जर्व होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइक सेलेक्टिव ट्यूबुलर। मतलब क्या है? यूनिफेरस ट्यूबुल और नेफ्रॉन। तो सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ट्यूबुल और नेफ्रॉन with the selective absorption, so called as selective tubular reabsorption। समझ में आ रहा है कि नहीं?
एक्चुअली इसका डायग्राम वगैरह है, ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारा डायग्राम वगैरह है, उसको करने में टाइम लग जाएगा। एंड थोड़ा सा उस टाइम में हम लोग क्वेश्चंस बना लेते हैं, दैट विल बी मोर इजी।